Hello students, welcome back to my YouTube channel Supreme Learning Academy. This is SSLC third language Hindi passing packages. If you read this much you can score out of out. Here chapter wise important questions and in right side one grammar part is also explained. So let's get started. If you are new to my channel, subscribe the channel and share to friends and don't forget to hit the like buttons. So let's get started. First chapter Kashmiri Seb. Important questions about Kashmiri Seb. So 8 questions in first page and in right side प्रेरणार्थक क्रिया शब्द is also there. For example, if they give लगना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक शब्द लिखिए, आंसर should be लगाना. If they ask द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द लिखिए means लगवाना. Like that some examples are given in right side. See in exam how they ask निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है, आंसर is सिखाना. Like that. So this is first chapter with one topic grammar done. Then come to second chapter Gillu. Important questions about Gillu. And in right side punctuations, that is viram chinha. In right side alpa viram chinha, ardha viram chinha, purna viram chinha. So चिन्ह with questions. मोटर उसके ऊपर से निकल गई. The symbol used here is विस्मयादिशक चिन्ह. क्या तुम थक गई हो, प्रश्नार्थक चिन्ह. Like that they'll ask. So this is the important questions about Gillu and alpa viram done. This one viram chin done. Then लिंग बदलिए. नाइन का लिंग बदलिए नाई. ठाकुर ठाकुराइन. सेठ सेठानी. माल मालकिन. Like that. So next come to next lesson मेरा बचपन. So important questions about मेरा बचपन in right side लिंग बदलिए. Some more examples. If you read this much, this is enough for your annual exam also. Now come to next lesson बसंत की सच्चाई. Important questions about बसंत की सच्चाई. In right side some questions regarding लिंग बदलिए and वचन बदलिए. Option some more example for वचन बदलिए. लिफाफा लिफाफे. चीज़ चीज़ें. रुपया रुपये. आंख आंखें. Like that. So that is वचन बदलिए. So next lesson internet क्रांति. Important questions on internet क्रांति. In right side वचन बदलिए. Some more examples. If you read this one, this is enough. We have one lesson with grammar part. Both are covering here. नेक्स्ट मुहावरे का अर्थ लिखिए. अंगूठा दिखाना, इनकार करना. ठस्से मसना होना, विचलित होना. पाँव फाड़ना, प्रभात होना. आंखें दिखाना, डराना. सो दिस आर ऑल द इम्पॉर्टेंट मुहावरे. कम टू नेक्स्ट लेसन ईमानदारों के सम्मेलन में. इन लेफ्ट साइड. इन राइट साइड मुहावरों के अर्थ. सम मोर एग्जाम्पल ऑन मुहावरों के अर्थ एंड सम क्वेश्चंस हाउ दे आस्क. नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट लेसन महिला की साहस कथा. इन राइट साइड विलोम शब्द एग्जाम्पल्स. टेक स्क्रीनशॉट एंड रीड आउट. नेक्स्ट लेसन मातृभूमि. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मातृभूमि एंड इन राइट साइड संधि. ई ऊ means it is दीर्घ संधि. Some example for संधि. Next अभिनव मनुष्य. Next lesson here in right side संधि. Some more example and some more questions regarding संधि how they ask in your exam. Next come to तुलसी के दोहे. In left side important questions on तुलसी के दोहे. In right side की और की प्रयोग. Where to use की and where to use की. Some examples. Next समय की पहचान. Left side. In right side समास. So explanation about समास.
Next one, Sursham, left side. In right side, some more example of samas and some more questions according how they ask in your exam. Next, Padya Bhaga Purna Karra. In right side, Karak और विभक्ति चिन्ह. नेक्स्ट वन पूरक वाचक. शनि सबसे सुंदर ग्रह है. कैसे? दिस इज गिव रीजंस. So from these questions only you will get for your annual exam. Practice these questions. Next, Patra Lekhan. How to write Patra. घरेलू पत्र, that is informal letter. नेक्स्ट, essay writing निबंध. पर्यावरण का महत्व. So here you have to write like this. विषय प्रवेश, अर्थ and पर्याय का लाभ, एक शौक, उपसंहार. Like that you have to write like point wise. Then only you will get full marks. जनसंख्या की समस्या. Essay writing on जनसंख्या की समस्या. These are all the important topics of essay. With answers are there. How to write, just read out. You'll get idea how to write essay. Then internet, essay writing on internet. Next, Swachh Bharat Abhiyan, essay writing on Swachh Bharat Abhiyan. Next, Paryavaran Pradushan, that is environmental pollution. So this is your passing package for SSLC students, third language in Hindi. If you read this much, you can score out of out. And I am uploading one by one all subject passing packages. If you read that packages, you can score above 80 to 85%. So stay tuned for next subjects. Thanks for watching. Bye bye.